Bismillah, alhamdulillah. This is the last part of embryological clinchers, and inshallah, in this lecture, we will be covering the last two files fetal membrane, and the other one is the prenatal diagnosis. So, let's start our first file here. इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं दैट आर हेयर जिसमें fetal membrane है फर्स्ट और इसका सारा डाटा ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बट वी विल नॉट डिस्कस इट हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वी आर इंटरेस्टेड इन क्लिंचर्स हियर okay the absence of one umbilical artery can lead to the renal malformation the answer is umbilical artery polyhydramnios can be associated with GI malformations such as esophageal atresia. So the main point is polyhydramnios. Common cause of oligohydramnios is renal agenesis. Far more important point जो कि different exams में repeat हुआ है. Amniotic fluid is primarily produced by fetal kidneys after 24 weeks. Or next the procedure of amniocentesis involves withdrawing fluid from the amniotic sac. The yolk sac provides initial nutrient exchange and contributes to the formation of primitive circulatory system that is yolk sac. The clinical feature of absence of one umbilical artery is commonly associated with congenital defects umbilical artery. The physiological umbilical hernia occurs due to insufficient space for growing intestine. Then amniotic bands can cause limb deformities or constitution of fetal membrane. Okay, the next one is the multiple pregnancy, and here we have all the data related to it, and we are interested here. So the dizygotic twins are formed by fertilization of two separate eggs by two sperms. Dizygotic two eggs and two sperms. Monozygotic twins are genetically identical. Okay, the next one is the most common cause of type of conjoined twins is thracophagous. Thracophagous chest infusion को बोलते हैं chest fusion. Then fetus papyrus is a flattened twin caused by intrauterine death. The flattened twin in monochorionic twins, the placenta is shared. And the next is zygosity of twins is determined by the timing of the division of fertilized egg. Conjoined twins are classified based on the site of the fusion, with Rhacophagus being the most common. Monozygotic twins may have one or more placenta depending on the division timing. Diachronic diamniotic twins have two separate placentas, amniotic sacs. And then we have the important atlas figures. इसको skip करके हम last part की तरफ चलते हैं. Okay, here we have the first segment is prenatal diagnosis, and we have all the important data related to it. Okay, teratogens cause defects during embryonic development. The answer is teratogen. Folic acid supplementation reduces neural tube defects. ये 3 से 4 दफ़ा repeat हो चुका है MCQ. Sonic hedgehog signaling plays a crucial role in limb development. Alcohol is non-teratogen leading to fetal alcohol syndrome. Notes delta pathway is the key for cell differentiation. Cytomegalovirus is from the torch. ये torch जो है 5 important organisms हैं उससे related infectious diseases हैं जो कि mother से fetus में हो सकती हैं. Then radiation exposure is known cause of birth defects. Then Prader-Willi syndrome is due to paternal chromosome deletion जो chromosome 15 होता है उसकी वजह से होता है और इसमें 2 phases होते हैं ये डिटेल से अभी नहीं मैं बताना चाहूँगा आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे है डेस एक्सपोजर इन यूट्रो causes vaginal clear cell carcinoma. Next molecular regulations teratogenicity. इसमें हम डाइव करते हैं और देखते हैं. Okay, so the table is here. I think ये रिपीट हो रहा है सारा टेबल. इसमें आपको ये नया मिल रहा है शायद रेडिएशन एक्सपोजर नहीं आई थिंक ये भी रिपीट हो रहा है सो द टेबल इज द सेम. ओके आई थिंक इसमें बाकी सारी डायग्राम्स हैं और आपका यहीं पे ये पार्ट भी कंप्लीट होता है. आई होप सो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये लेक्चर्स लिए हुए हैं सारा टेबल पड़ा हुआ है यानी ये फाइल्स ली हुए सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो
उनके लिए तो आई होप सो कि किसी तरह की भी कोई मुश्किल नहीं आई होगी। और जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने मेरा कोई भी ऑलरेडी लेक्चर या कोई भी मेरा कंटेंट पहले नहीं लिया, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, या वो अपने एमसीक्यूज़ को जो आपको मार्क करवाए हैं बुक पे मार्क करके डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ग्रुप्स के अंदर, ताकि आपकी ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो सकें। और यहीं पे आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सब्जेक्ट में किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।